Hello everyone. In my previous lecture, I discussed Plato's objections against poet and poetry. Actually, Plato raised four main objections against poet and poetry. In this lecture, we will discuss the replies to those four objections. So in order to understand this lecture, you need first to watch that one. So let's begin our today's lecture, Aristotle's as a critic of Plato. So Aristotle was actually the student of Plato, right? And he is going to answer those queries, those questions, or those objections raised by his teacher against poet and poetry. So Aristotle, he was the pupil of Plato. He was a realist while Plato was an idealist. So he answered charges against poetry. Aristotle was born in 384 and he died in 322. So was a pupil of Plato. Plato had set up an academy where he taught philosophy. So in that academy, Aristotle used to come and he also learned philosophy from Plato. Now people eagerly went to his academy to learn wisdom. So philosophy for the Greek did not mean what it means today, right? Because whatever you learn that time rationally was called philosophy. If that was mathematics, if that was chemistry, if that was for example, biology, astronomy. So whatever you learn, that subject you learn rationally, that was called philosophy. So philosophy had different definition or different concept if you compare it with today's concept. So it means a rational study of everything. Whatever subject was expounded logically, thus it became philosophy. Among many people who went there was a young man, and that young man was called Aristotle. So Aristotle जो था वो दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ था. ओके, वो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, वो क्वेश्चन करता, राइट? सो ही हैड अ ग्रेट रेफरेंस फॉर प्लाटो. ये हम जानते हैं कि ग्रीक टाइम में टीचर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था. सो द सेम एरिस्टोटल आल्सो गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू his teacher Plato, but he was not like others. How can we say that he was not like others? जो और स्टूडेंट जो भी प्लाटो कहता था तो उसके स्टूडेंट्स उसको एक्सेप्ट करता था. But he was not like other. He was not taking things for granted, right? And he would ask question whether something is true or not, correct or incorrect. So he was a critical one. He did not accept everything, but found fault and came to conclusion different from Plato, right? So he was a critical, right? He would ask question, right? He was not taking things for granted, and he would find a fault in everything. और फिर उसकी वो जो है ना मुख्तलिफ नताइज के साथ सामने आता. So when he grew up, he started his own school in which he expounded his views because he was a realist, contrary to his teacher who was an idealist. So his philosophy was very different, in fact opposite to Plato. Plato was an idealist and he was a realist. He disagreed Plato. So in his book he has given criticism of Plato's views and expounded of his own view. He has taken Plato's charges one by one and refuted them, but his replies are scattered in different contexts. For example, his answer to the metaphysical charge is found in the theory of mimesis. So he gives the second replies when he discussing his view of tragedy. So एक चीज़ जो नोट करने के काबिल है कि अरिस्टोटल ने कहीं पर भी प्लेटो का नाम नहीं लिया है, राइट? ही जस्ट replies to his charges, but nowhere he used the name of Plato because he had a great reverence for
his teacher. So ये बुक भी, पोइटिक बुक भी अरिस्टोटल ने खुद नहीं लिखी है, बल्कि उसके जो स्टूडेंट्स होते थे तो वो अपने साथ वो जो भी वो कहता था पोइट्री के हवाले से या प्लेटो के जो आर्गुमेंट्स थे उसके जवाब देते तो स्टूडेंट उसको नोट करते थे। फिर लेटर ऑन उसके स्टूडेंट्स जो उन्होंने उस लेक्चर्स को कंपाइल किया और आज हमारे पास वो पोइटिक बुक के शेप में available hai. So that's why that we say that his replies are scattered when he was discussing the theory of mimesis. So we can find the first charge that was based on metaphysical charge. Similarly, the second reply when he was discussing the view of tragedy, that word is tragedy. So we will take the charges of Plato one by one and how Aristotle replied them. Now you can see here that definition of poetry, imitation and mimesis. So Plato defined poetry as an imitation, right? The Greek word for this is mimesis. So by imitation we imply an inferior copy. Aristotle uses the same word for art. So Aristotle also says that art is mimesis. Right, okay, or poetry is mimesis. And Plato had also said that poetry is an imitation or poetry is an mimesis. But Aristotle had given different meaning to the word mimesis, right? His interpretation of the word mimesis is different from Plato. How? But he gives it a new meaning. He refutes the view of Plato and gives answer to his charges. But nowhere does he name Plato. After all, he had been a student of Plato. Because it would be a disrespect for Plato that if Aristotle used the name of Plato. कि Plato ने इस तरह कहा था लेकिन वो गलत था और ये इस तरह नहीं है, ये इस तरह है. So nowhere he used the name of Plato. He only criticized his ideas. So according to the Greek view of a relationship between a teacher and a student, it would have been disrespected to him to criticize his teacher. So he does not criticize Plato, but his ideas, his views. So the first reply, Plato had said that poetry or art is an imitation of imitation. Thus, we are twice removed from reality. So, what does this point or this argument is based on metaphysical? Fine. So, the first reply, object combination of matter and form. Plato had said that poetry is an imitation of imitation. Thus, we are twice removed from reality. Everything existed in the world of nature is already an imitation, is already a copy. So when an artist comes or when a poet comes, so he or she is making a copy of a copy. जिस तरह हमारे पास एक ओरिजिनल चीज़ होती है, हम उनसे कॉपी निकालते हैं, फोटोस्टेट निकालते हैं, और फिर हम फोटोस्टेट से फोटोस्टेट निकालते हैं, तो वो कितना ख़राब होगा, मतलब कि उसकी क्वालिटी उस तरह नहीं रहेंगी. सो इस तरह प्लेटो ने भी कहा था कि पोइट्री या आर्ट जो है ना वो इमिटेशन ऑफ इमिटेशन है. दस वी आर नॉट वंस रिमूव फ्रॉम रियलिटी बट ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी. मतलब कि अगर आपके पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से एक कॉपी बनाते हैं, सो वो कॉपी ओरिजिनल की तरह नहीं होंगी, वो उससे क्वालिटी में ख़राब होंगी. फिर आप कॉपी से कॉपी बनाते हैं तो और भी ख़राब होंगी. सो वो तो 2 गुना या 2 टाइम्स ओके रिमूव फ्रॉम रियलिटी हुआ. सो अरिस्टोटल उसको इस ऑब्जेक्शन का जवाब देता है कि एवरी ऑब्जेक्ट वी हैव इन दिस वर्ल्ड, right? If that is, for example, an animal, a horse, a human being, river, moon, plant, flower, right? Chair, whatever we have, every object is the combination of 2 things. One is matter and one is form. Now, form tries to make us ideal.
the form tries, right, to make the matter an ideal one. Now, writer imitates that ideal, right? Just wait a minute. What ought to be or what might be. So Aristotle says, right, that the poet or an artist or a writer imitates that ideal, what ought to be or what not, what ought to be or what might be. So actually that he wants to say कि poet जो होता है तो वो तो चीज़ों को कॉपी नहीं करता, बल्कि वो तो आइडियल को कॉपी करता है. क्योंकि अरिस्टोटल कहता है कि हर ऑब्जेक्ट दो चीज़ों से बनी हुई होती है. एक हमारे पास फॉर्म होता है जो एक फोर्स होता है, राइट, और एक हमारे पास मैटर होता है. फोर्स जो होता है वो मैटर के अंदर काम करता है कि उसको आइडियल बनाए, लेकिन फोर्स इसमें नाकाम हो जाता है, वो चीज़ को आइडियल नहीं बना सकता, क्योंकि जो मैटर होता है वो ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, हार्डल्स क्रिएट करता है. सो पोइट जो होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं, वो विजुलाइज करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर इस फोर्स ने, इस फॉर्म ने इस मैटर पर मुकम्मल तौर पर या परफेक्टली काम किया होता तो ये ऑब्जेक्ट किस तरह लगता. सो वो जो आइडियल है ना, आइडियल जो उस चीज़ में, जो ऑब्जेक्ट में मौजूद नहीं होता, सो पोइट उसको परसूव करते हैं, राइट. सो वी विल डिस्कस नाउ इन डिटेल. फॉर प्लेटो, art is an imperfect copy of imperfect copy, because copy is already an imperfect one. And if you're making copy of a copy, so then you're twice removed from reality. So twice removed from reality, so it is false. What is false? Poetry is false. Art is false. There is no truth in poetry. There is no truth in art. Fine. So Aristotle differs in his existence, right? That poetry is an imitation of not what is or has been, but what might be or what ought to be. So Aristotle कहता है कि poetry is an imitation of not what is, right? और नॉट वट हैज़ बिन. नॉट वट इज़. वट इज़ का मतलब है कि पोइट जो है ना, जो चीज़ आपके सामने होती है वो तो उसको इमिटेट नहीं करते, जो प्रेजेंट होता है, राइट. आपके सामने फॉर एग्जांपल एक बंदा है, आप उसको डिस्क्राइब करते हैं पोइटिक फॉर्म में, या आप एक आर्टिस्ट है, आप एक ड्राइंग बनाते हैं. सो अरिस्टोटल कहता है कि पोइट जो होता है वो एक्चुअली इसको इमिटेट नहीं करता जो है, because it is the work of a scientist, right, to describe a state of affair. Poet also वो imitate नहीं करता what has been, जो हो चुका है, क्योंकि वो काम तो हिस्टोरियन का है, जो माजी में हुआ है. बट पोइट जो है ना, वो किस चीज़ को imitate करता है? वो imitate करता है what might or ought to be, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो चीज़ है ही नहीं. सो पोइट इमिटेट करता है व्हाट माइट बी और व्हाट आउट टू बी. सो वो तो उस आइडियल को इमिटेट करता है जो है ही नहीं. तो जो चीज़ है ही नहीं और आप उसको इमिटेट करते हैं, उसको आप बयान करते हैं, तो वो कॉपी किस तरह हुई? फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिस्ट जो होता है वो ड्राइंग बनाता है, तो उसके सामने एक बंदा होता है, तो वो तो बंदे की ड्राइंग नहीं बनाता. वो ये सोचता है कि इस बंदे में जो फोर्स काम करता है और जहाँ पर वो फेल हुआ है और उसने काम नहीं किया है, तो वो तो उसको इमिटेट करता है. सो किस तरह फिर ये जो है ना स्लेविश कॉपी हो गई? ये तो कॉपी है ही नहीं, ये तो क्रिएशन है. सो अरिस्टोटल समझता है कि दिस इज क्रिएशन, राइट. दिस इज द पोइट इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ हिज इमेजिनेशन. सो दिस इज नॉट लाइक अ स्लेविश कॉपी. सो Plato, once again we come here, Aristotle differs, okay, in his existence, and he said that poetry is an imitation of not what is. शायर तो उस चीज़ को इमिटेट ही नहीं करता जो है या जो हो चुका है. जो हो चुका है वो तो हिस्टोरियन का काम है,
जो है वो तो साइंटिस्ट का काम है जो प्रेजेंट में स्टेट ऑफ अफेयर को डिस्क्राइब करते हैं, बल्कि पॉइंट तो इमिटेट करता है कि व्हाट माइट बी और व्हाट आउट टू बी, राइट। एंड व्हाट माइट बी और व्हाट आउट टू बी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता और आप उसको इमिटेट करते हैं तो कॉपी नहीं हुई, दैट इज द क्रिएशन ऑफ योर इमेजिनेशन, right? So he rejects Plato's idea and he does not agree with Plato that idea has an objective existence and the world of idea is absolute. So वो क्योंकि आइडियलिस्ट था और वो कहता है कि प्लाटो ने कहा था कि आइडिया हैज़ बीन ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस, कि आइडिया जो है ना उसकी ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस हमारे जहन से बाहर है। वो कहता है कि नहीं, अरिस्टोटल कहता है कि नहीं, वो तो है, वो तो उसकी ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस है ही नहीं आइडिया की। सो फॉर अरिस्टोटल आइडिया इज अ मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन, इट्स नॉट एब्स्ट्रक्शन, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन। सो आइडिया इज अ मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन एंड बोर्न आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो क्योंकि वो रियलिस्ट था अरिस्टोटल, वो कहता है कि आप चीज को देखते हैं तो आपके जहन में एक आइडिया आ जाती है, आइडिया ऑलरेडी आपके जहन में नहीं होता। प्लाटो का ख्याल था कि पहले हमारे जहन में एक आइडिया होता है, फिर हम वो चीज़ बनाते हैं उस तरह, जबकि अरिस्टोटल ने कहा कि नहीं, आइडिया जो होता है वो तो तब हमारे जहन में बनता है जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ही वॉज अ रियलिस्ट। सो ऑफ एग्जिस्टेंस आउटसाइड्स ऑफ माइंड फॉर हिम व्हाट एग्जिस्ट दैट इज रियल, दैट इज नॉट आइडियल, फाइन। So Plato used the word idea and thing. Plato ने दो अल्फाज यूज किए थे, एक आइडिया और एक थिंग। आइडिया हमारे माइंड में है और थिंग जो है ना वो बाहर है, जो कॉपी है। अरिस्टोटल यूज द वर्ड फॉर्म एंड आइडिया। उन्होंने एक वर्ड यूज किया है फॉर्म फॉर आइडिया, अरिस्टोटल ने, राइट। एंड मैटर इज द मटेरियल and matter the material and form is the force working with it. So simply we can say कि प्लाटो ने कहा था, दो चीज़ें उसने यूज़ की थी कि आइडिया और थिंग। अरिस्टोटल ने यूज़ किया था कि फॉर्म एंड मैटर। सो अरिस्टोटल ने फॉर्म यूज़ किया है आइडिया के लिए, और जो प्लाटो ने यूज़ किया था थिंग, तो अरिस्टोटल ने उसके लिए यूज़ किया है मटीरियल, राइट। So the form working inside the material, right? And to make it an absolute, an ideal thing, an ideal person. So Aristotle believed that there can be no matter without form. वो समझता है कि every object जो है ना वो दो चीज़ों से बनी है, एक form है और एक matter है। form जो है ना वो matter के बगैर exist नहीं कर सकती, और मैटर जो है ना वो फॉर्म के बगैर एग्जिस्ट नहीं करती। सो दोनों जो है ना वो इंटर डिपेंडेबल है ऑन ईच अदर। सो विदाउट फॉर्म देयर कैन बी नो मैटर एंड विदाउट मैटर देयर कैन बी नो फॉर्म। सो ये दो बातें अरिस्टोटल ने यूज किए हैं, फॉर्म एंड मैटर। प्लेटो ने यूज किया है आइडिया एंड थिंग। सो बोथ आर inseparable. You can't separate form from material, matter, and matter from the form. Everything in this world, whether man, tree, or mountain, is a combination of matter and form. जो भी हमारे पास दुनिया में मौजूद है, everything that is the combination of form and matter. As he give example here, we can say like a man. Man की एक body है, flesh, that is material, and inside the man is what? That is form, that is the soul, right? And similarly that we can see tree. Tree हमारे पास एक, what is tree is made of? That is wood. And inside the tree we have a form, we have a force. So हर ऑब्जेक्ट में ये फोर्स जो होता है ये काम करता है कि वो इस मैटर को आइडियल बनाए, एक आइडियल ट्री बन जाए, एक आइडियल मैन बन जाए, एक आइडियल माउंटेन बन जाए, एक आइडियल चेयर बन जाए, राइट, एक आइडियल घर बन जाए। लेकिन एक्चुअली इस तरह होता नहीं है, क्योंकि ये जो मैटर है इट इज टू मच ऑब्स्ट्रक्टिव, राइट, हार्ड, नॉट इजीली टू बी मोल्डेड
in its shape. So force जो होता है तो वो absolutely inside the matter काम नहीं कर जाता, वो fail हो जाता है to achieve its goal, 100% goal. That's why we have flaws. Okay, we can't find a beautiful person in this world. We can't find a beautiful house in this world. We can't find a beautiful mountain. So we don't have, nothing is perfect in this world because the matter does not allow the force to work 100% and to achieve its goal. That's why that we have flaws and we have, you see, shortcomings in everything. Now, thing is not, Aristotle says, thing is not a slavish copy of metaphysical idea. Right? जो अरिस्टोटल ने कहा था कि हमारे पास जो मेटाफिजिकल आइडिया होता है, तो जो चीज़ हम बनाते हैं इस दुनिया में होता है, तो वो एक स्लेविश कॉपीज होता है हमारे आइडिया का. हमारे जहन में एक आइडिया होता है, राइट, फिर वो चीज़ जो है ना आ जाती है. एक शायर होता है तो वो क्या करता है, वो वर्ल्ड ऑफ नेचर में एक इंसान को कॉपी करता है, उस पर कुछ लिखता है, कोई चीज़ पर लिखता है और लिखता है, एलिजी लिखता है, तो वो ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट करती है. एंड दोज थिंग्स आर आउट ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. सो जो इमेजिनेशन में होता है या जो आइडिया होता है तो वो परफेक्ट होता है. जो थिंग होता है आउटसाइड ऑफ योर माइंड, दैट इज इम्परफेक्ट. और फिर शायर आता है या आर्टिस्ट आता है और वो उस इम्परफेक्ट कॉपी की और कॉपी बनाता है, दस ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी. सो अरिस्टोटल वो कहता है, अरिस्टोटल कहता है कि थिंग इज नॉट अ स्लेविश कॉपी ऑफ मेटाफिजिकल आइडिया. थिंग जो होता है वो आपके माइंड की एक कॉपी नहीं होती, बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म एंड मैटर. राइट? प्लाटो, लेट मी टेल यू अगेन, प्लाटो समझता है कि हमारे पास इस दुनिया में जो चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो एक कॉपी है. किस चीज़ की कॉपी है? वो एक माइंड की कॉपी है, जो माइंड में होता है. फॉर एग्जाम्पल उस ज़माने में डिफरेंट गॉड्स होते थे. सो शायद उस टाइम के गॉड्स ने इन चीज़ों को बनाया है. और जो गॉड्स उन चीज़ों को बनाता था, तो जो गॉड्स के जहन में होता था तो वो परफेक्ट होता था, और जब बाहर आता था तो वो इम्परफेक्ट बन जाता था. फिर शायर और आर्टिस्ट उस इम्परफेक्ट चीज़ को कॉपी करते तो वो ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी हो जाते. अरिस्टोटल कहते हैं कि नहीं, जो भी चीज़ इस दुनिया में मौजूद है वो एक मेटाफिजिकल आइडिया के बेस पर नहीं है, बल्कि आइडिया तो तब बनता है जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं. सो वो समझता है अरिस्टोटल कि थिंग जो है ना इस दुनिया के, वो हर ऑब्जेक्ट, हर एक चीज़, वो दो एलिमेंट से बना होता है, एक फॉर्म और एक मैटर. But it is the combination of form and matter. So matter is the material of which we are made, and form is the force working within the matter. So this force is dynamic. Force dynamic होता है. It leads to activity. So it is following a purpose. क्योंकि force का या form का एक purpose होता है, वो चाहता है कि चीज़ जो है ना वो ideal बन जाए. But it operates within the matter and leads towards an ideal. It trying to mold the matter in the form of ideal thing. Force चाहता है कि वो एक चीज़ को आइडियल बनाए, एक बंदे को आइडियल बनाए, एक घर को आइडियल बनाए, एक चेयर को आइडियल बनाए, एक हॉर्स को आइडियल बनाए. Ideal man, ideal state, law, etc. But we do not find an ideal thing in this world. Why we cannot find an ideal person, a perfect, beautiful person, a man, woman? You see a house, a horse, a chair, you see a painting. Why we can't find an ideal thing in this world? He answered that why we do not find an ideal thing in this world. Aristotle gave the reason. He says that the matter is obstructive. It's very hard. It cannot be easily molded. ये बहुत सख्त होता है, तो ये easily perfect ideal shape में नहीं आ सकता. It cannot easily molded, so it would not allow itself to be molded into an ideal thing. So the result is that what is produced falls very short of ideal. So there is no ideal man, woman, law, etc. because matter obstruct the activity of this force. So but the degree differ.
It fails more in some cases than others. So there are degrees. That's why we have some pretty and ugly people. यहाँ पर वो कहता है कि मैटर जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, राइट. इट कैन नॉट बी easily molded and it would not allow itself to be molded into ideal thing. इसलिए दुनिया में हमारे पास कोई आइडियल चीज़ नहीं है, हमारे पास कोई आइडियल बंदा नहीं है, राइट. And we don't have an ideal man, an ideal woman, law, etc. because matter obstructs the activity of this force. So वो जो फोर्स है या जो फॉर्म है तो उसकी एक्टिविटी को वो मैटर महदूद करता है. इसलिए हमारे पास दुनिया में कोई भी जो है ना परफेक्ट या आइडियल बंदा नहीं है. फिर वो कहता है कि ये जो फोर्स है तो ये डिफरेंट डिग्री में काम करता है. कभी कभी इस तरह होता है कि ये फोर्स जो है तो ये लेट्स सपोज 50% काम करता है, 60% करता है, 70% करता है, 80% करता है, 90% करता है. इसलिए हमारे पास वो कहता है कि कुछ अगली लोग होते हैं, कुछ ब्यूटीफुल होते हैं. जो ब्यूटीफुल होता है सो परहैप्स उसने फोर्स जो है ना वो 90-95% काम किया होता है. और जो हमारे पास अगली बंदा होता है, अगली चीज़ होती है तो उसमें फोर्स जो है ना उन्होंने कम काम किया होगा, 40%, 30%, 50%, 60%, 70%. सो किसी में वो जो फ्लाज है वो कम रह जाती हैं और किसी में वो फ्लाज ज़्यादा हो जाती हैं. लेकिन वो डिनाई करता है कि हमारे पास कोई आइडियल मैन, वुमन या चीज़, कोई भी हमारे पास आइडियल चीज़ नहीं होती. और इसकी वजह ये होती है कि ये जो फोर्स है ये उसकी डिग्री जो है ना वो डिफर्स करती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम. सो इट फॉल्स मोर इन सम केसेस देन अदर. कभी कभी ये ज़्यादा कम करता है फोर्स, कभी कम करता है. देयर आर डिग्रीज. दैट्स वाई वी हैव sometime pretty and we have ugly people. Sometime we have pretty painting, sometime we have ugly one. Sometime we have more comfortable chair, sometime we don't have. Sometime we have more attractive tree, sometime we don't have attract. So जो भी है दुनिया में वो ideal नहीं होती. Because of the force cannot work perfectly, because not because of the force but because of the matter. The matter does not allow the force to achieve its goal. Now, poet tries to find out what was that ideal which the form was trying to achieve. Poet जो होता है is very important. ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ पर जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं very very important and very very essential to understand the concept of mimesis. So Aristotle कहता है कि the poetry या the poet try to find out what was that ideal which the form was trying to achieve. वो कहता है कि फॉर्म जो है ना वो एक चीज़ को, एक बंदे को, एक ऑब्जेक्ट को वो आइडियल बनाना चाहता है, लेकिन मैटर उसको अलाउ नहीं करता. सो पोइट जो होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं वो विजुलाइज करते हैं, राइट, कि जहाँ पर वो आइडियल फोर्स ने जो अचीव करना चाह रहा था, जहाँ पर वो फेल हो चुका है, तो पोइट या आर्टिस्ट उस आइडियल को कॉपी करते हैं. तो आइडियल तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस लेवल कॉपीज नहीं हुआ. सो अरिस्टोटल कंसिडर थिंकिंग टू बी द ग्रेटेस्ट फोर्स इन मैन, राइट. सो मैन जो होता है, पोइट जो होता है, आर्टिस्ट जो होता है, वो विजुलाइज करता है, वो सोचता है, वो थिंकिंग करता है. थिंकिंग, अ पोइट ट्राइज टू फाइंड आउट देयर आइडियल इन ईच केस. वो हर चीज में वो आइडियल तलाश करता है. सपोज एक पेंटर होता है, वो पेंटिंग बनाता है, वो एक बंदे को देखता है, उसकी स्केच बनाता है, उसकी पेंटिंग बनाता है. सो अब पेंटर वो विजुलाइज करेगा कि इस बंदे में अगर फोर्स ने मुकम्मल तौर पर काम किया होता और इसको एक आइडियल बंदा बनाया होता तो ये किस तरह लगता. तो वो उस जो आइडियल है वो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, जो है उसको वो नहीं करता. सो दे इमिटेट नॉट दिन थिंग्स, वो तो चीज़ों को इमिटेट ही नहीं करते, बट
द आइडियल विच कैन नॉट बी अचीव, लेकिन जो आइडियल वो चीज अचीव नहीं कर सका तो वो उस आइडियल को इमिटेट करता, कौन? पोइट और आर्टिस्ट. सो व्हाट द पोइट इज इमिटेटिंग डज नॉट एग्जिस्ट, दे इमिटेट अनरियलाइज आइडिया. वो उस आइडिया को कॉपी करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो फोर्स ने चाहा लेकिन वो फोर्स अचीव नहीं कर सका तो वो उसको कॉपी करते हैं. सो अनरियलाइज बिकॉज द फोर्स वॉज ट्राइंग टू अचीव बट फेल्ड. So they are not imitating a particular thing as Plato thought, but unrealized ideal which has not happened, जो हुआ ही नहीं है. So the poets or the artists do not imitate what is or what happened, but what might be or what ought to be, जो हुआ ही नहीं है. Therefore the poets cannot be called copyists. Poet is creator. What he gives is not just thing but the imaginative reconstruction of them. So what he is conveying is not falsehood. Poetry has its own truth. It is different from a scientific truth. Okay? Because poetry, it does not talk about what is or what has been, but what might be, what ought to be. So that is ideal truth. So it is different truth from the scientific truth. It is also different from historical, because history, what has been. Science, what is. Poetry, what ought to be or what might be. So the scientists imitate what the facts are, and the historian imitates what has been, and the poet imitate what might be or what ought to be. So poetical truth is not factual truth but ideal truth. So art is not servile. It is not twice removed from reality. The artist is not a imitator but a creator. He gives vision of unrealized thing. So यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पोइट जो होते हैं वो अनरियलाइज आइडिया को कॉपी करते हैं, वो आइडियल को कॉपी करते हैं. वो उन चीज़ों को कॉपी नहीं करते जो एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि वो उन चीज़ों को कॉपी करते जो एग्जिस्ट नहीं करते, जो आइडियल होते हैं, जो माइंड में होते हैं, या वो फोर्स जो अपना टारगेट, अपना गोल अचीव नहीं कर पाता, वो उसको कॉपी करते हैं. सो ये तो आइडियल ट्रूथ है. सो प्लाटो वो कहता है कि उसका आइडिया इस सेंस में ठीक नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि प्लाटो समझता है कि पोइट्स जो होते हैं वो इस दुनिया की चीज़ों को कॉपी करते हैं, जो कि खुद एक कॉपी है. सो ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी. अरिस्टोटल कहता है कि नहीं, वो तो चीज़ों को कॉपी नहीं करते, बल्कि वो तो अनरियलाइज वो तो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वो चीज़ों को क्रिएट करते हैं. सो दे आर नॉट इमिटेटर्स बट दे आर creator. So this poets or poetry is poets are not twice removed from reality, but what they imitate, that is unrealized thing. So वो समझता है कि because art or poetry deals with ideal truth, is different from scientific truth. So scientists they discuss, okay, or they imitate what facts are. Historian imitates what things were or what happened, while the poets imitate what might be or what ought to be. So I hope you got the first objection which was raised by Plato, that was on metaphysical ground, and how did Aristotle defend this argument. Second reply, that is suppression, harmful, not expression, same idea expressed by Sigmund Freud. Aristotle used catharsis and Freud used sublimation. I guess the video will become longer, so it's better that we discuss this part of this lecture in a separate lecture, right? So please keep watching and provide your valuable comment and feedback. So we will discuss in the next lecture the second, and we will also discuss if the lecture become not that much longer, so we might discuss the third and fourth argument of Plato also. And how did Aristotle defended those three arguments. So keep watching and stay tuned and wait for the next lecture. Thank you so much.